So let's get started again. So we have got what we are discussing this time is step like controllability, है ना? Yes sir. तो मैंने एक theorem last time state की थी, which actually relates to the tests for controllability, tests for checking the controllability of a system. Yes. तो उसमें मैंने एक theorem state की थी जो मैंने उसकी definition आपको दी थी. But I told you that before discussing the theorem, we will have to prepare ourselves with the background of proving and discussing that theorem. Yes. Okay. So उसमें कुछ टर्म्स आती थी, कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन की बात आई उसमें, isn't it? तो वो ग्रामियन क्या होता है, आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे और हम कुछ रिलेटेड बातें भी डिस्कस करेंगे. Yes. Is that clear? So well first of all I'll give you some definitions. Linearly dependent set of vectors. Okay. Yes. What is a linearly dependent set of vectors, and how do we will actually prove the condition for the set of vectors to be linearly dependent? Yes sir. So consider a set of m vectors. Okay. Yes sir. Xi, where I goes from 1 to m. We have a set of m vectors xi, where I goes from 1 to m, that is x1, x2, x0 to xn. Yes. Each having n components. Each vector is having n component. n components. There is a set of vectors. Vectors total m है. Yes sir. हर एक vector के n components. Yes sir. Are you getting it? Yes. Then this set of vectors is said to be linearly dependent if there exists a set of m scalars alpha I running from 1 to m at least one of them being non-zero with satisfies the equation alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on alpha m minus 1 xm minus 1 plus alpha m xm equal to 0. Yes. ये हमने एक बार ही कोई फंक्शन ये रिलेशन यूज भी की है. Yes. जब हमने आइगन वेक्टर्स का वो थ्योरम प्रूव किया था, Yes. तो उसमें मैंने ये वाली थ्योरम यूज किया. नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट इट अ बिट फॉर्मली. So if you have a set of m vectors, Yes sir. each having n components, okay? Yes sir. Let's say you have a set of 4 vectors, each having 3 components. Yes. 4 vectors हैं आपके पास, हर एक के 3 components हैं. Sure. जैसे मान लो ऐसे, पहला वेक्टर कुछ ऐसा है x11, x12, x13. दूसरा वेक्टर है x21, x22, x23. ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है. हर एक वेक्टर की 3 कंपोनेंट्स हैं. ऐसे हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, x31, x32,
x3 3, इसी तरह चौथा वेक्टर x4 1, x4 2, x4 3, something like this. Yes, sir. Okay? Yes. If m is equal to n, then it's easy to prove it. उस केस में प्रूव करना इजी है, क्योंकि आप इसका एक मैट्रिक्स बनाओगे इसके कंपोनेंट्स का, और अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो आपके सेट सिंगुलर हुआ तो आपके सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट इन केस m is not equal to n, whether the number of components is more or the number of vectors is more, चाहे m ज्यादा हो या n ज्यादा हो, उस केस में मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करने की. यू एक्चुअली डिफाइन दिस एक्सप्रेशन. Yes, sir. Okay? And if this expression is true with at least one alpha being non-zero, then the set of vectors is said to be linearly dependent. Yes, sir. इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ली इन वेक्टर्स की. Yes, sir. आपने इन वेक्टर्स पे जो x1, x2, xm-1, xm है, इनको लीनियरली कंबाइन किया. Yes, sir. Through these scalars alpha, and you are able to generate a zero vector. Yes. You are able to generate a zero vector with at least one of these alphas being non-zero. उसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी वेक्टर जो होगा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो as the sum of other vectors. जी सर. मान लो कोई एक अल्फा नॉन जीरो है, मान लो ये वाला अल्फा 2, so you can write alpha 2 x2 is equal to sum of other vectors. जी सर. वो वाले वेक्टर्स उस साइड से लेके. Yes. That means x2 can be expressed as a combination of other vectors. Yes. So if x2 can be expressed as a linear combination of other vectors, that means this set of vectors is linearly dependent. जैसे आप देखते हो ना, जब आप मैट्रिसेस पढ़ते हो तो आपको रैंक, जैसे हम परसों रैंक की बात कर रहे थे, आपको रैंक निकालनी है किसी मैट्रिक्स की, तो आप क्या करते हो, आप रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो मैट्रिक्स पे. और अगर कोई भी कॉलम, कितने भी कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करके, इफ यू आर एबल टू गेट अ जीरो रो और अ जीरो कॉलम, दैट मींस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज दैट मच लेस. जितने आपने जीरो कॉलम से जीरो रोज बनाए, उससे उतनी कम होगी रैंक उसकी. उसका कहने का मतलब यह है कि आपका जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है. उसी वजह से आप एक जीरो वेक्टर जनरेट कर पाए. तो ये उसी को स्टेट करने का दूसरा तरीका है, एक जनरल तरीका है इसको स्टेट करने का. Is that clear? Yes, sir. So I can consider a set of m vectors xi, I running from 1 to m, each having n components. Then this set of vectors is said to be linearly dependent if there exists a set of m scalars alpha I running from 1 to m, at least one of them being non-zero, which satisfies this equation. Yes. Okay? Yes. Correspondingly, what is a linearly independent set of vectors? Linearly independent set of vectors so any set of vectors which is not linearly dependent is said to be linearly independent. Any set of vectors which is not linearly dependent is said to be linearly independent. Okay? Yes, sir. So a set of vectors is said to be linearly independent if there exists a set of m scalars alpha I running from 1 to m, which satisfies this equation, but with all alphas equal to 0. Yes. So that is, if alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on, alpha m minus 1 x m minus 1 plus alpha m x m equal to 0 implies that each alpha is equal to 0, then the set of vectors
x1, x2, so on up to xm is said to be linearly independent. Are you getting me? Yes, sir. मीन्स इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने का अगर एक ही तरीका है कि सभी अल्फा जीरो हैं, then this set of vectors is said to be linearly independent. Are you getting me? Yes, sir. तो जब भी आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स देखना हो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, आप ये वाली एक्सप्रेशन लिखो. Yes, sir. और इसमें अगर आप किसी तरीके से ये प्रूव कर पाओ कि ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी जबकि सभी अल्फा जीरो होंगे, then this set of vectors is said to be linearly independent. In other words, you cannot perform any linear combination of the given set of vectors with such that you get a zero vector with any alpha being non-zero. Yes, sir. तो मीन्स अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में अगर आप ये वाली एक्सप्रेशन लिखते हो तो ये एक्सप्रेशन तभी ट्रू होती है जबकि सभी अल्फा जीरो. Yes, sir. Are you getting me? That is the only condition for this equation to be true in case the given set of vectors is linearly independent. Are you getting me? Yes, sir. This thing must be pretty clear and at the back of your mind. Now we will see what is the condition for linear independence of vectors. Yes, sir. Condition for linear independence of a set of vectors. So how do we test whether a given set of vectors is linearly independent or linearly dependent? Yes, sir. So we'll consider, जैसे हमने अभी किया, consider a set of m vectors, है ना, xi, each having n components, Okay? Yes, sir. Assume that the given set of vectors is linearly dependent. हमें एक set of m vectors दिया हुआ है, each having n components. We assume that the given set of vectors is linearly dependent. So by definition of linearly dependent vectors, there exist scalars alpha I with I running from 1 to m, at least one of which is non-zero, such that that equation is true. So by definition of a linearly dependent set of vectors, there exists m scalars alpha I with I running from 1 to m, है ना? At least one of them being non-zero, such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on, alpha m minus 1 x m minus 1 plus alpha m x m equal to 0. है ना? Yes, sir. सही है? Yes, sir. We call this equation 1. Okay? Multiplying both sides of equation 1 by x1 transpose.
Yes, sir. pre-multiplying. ओके, हर एक वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं? n. Yes, sir. तो मैंने क्या किया? I pre-multiplied both sides with x1. So this is like this. है ना? Yes, sir. Proceed. सही है? Yes, sir. I call this as equation 2. पहले इक्वेशन को मैंने प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड से बाय x1 ट्रांसपोज. Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ कि I multiply equation 1 on both sides, pre multiply equation 1 on both sides by x2 transpose and go on doing it up to xm transpose. Yes, sir. I'll get m equations. Yes, sir. So I pre multiply both sides of equation 1 by x2 transpose and go on multiplying like that by x3 transpose, x4 transpose, so on Yes, sir. up to xm transpose to get the equations. दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे? Alpha 1 x1 transpose x2 transpose x1 है ना? Yes, sir. प्लस इसको अल्फा 2 x2 ट्रांसपोज x2 है ना? अल्फा m minus 1 x2 ट्रांसपोज xm minus 1 plus alpha m x2 transpose xm equal to 0. This I get as equation 3. Yes. And I get equations like that, है ना? Yes, sir. I'll get here alpha 1 last वाली equation क्या बनेगी मुझे? Alpha 1 xm transpose x1 Yes, sir. plus alpha 2 xm transpose x2 plus so on alpha m minus 1 xm transpose xm minus 1 सही है? Yes, sir. plus alpha m xm transpose xm equal to 0. तो ये बहुत सारी इक्वेशन मिलेगी मुझे, isn't it? Yes, sir. 2 से लेके आगे मेरे पास m इक्वेशन होंगी. Yes, sir. सही है? So writing these m equations from 2 onwards in matrix format. What do I get? So writing मैं ऊपर की ओर ये रब कर देता हूँ. जी सर. यहाँ तक मैं रब कर सकता हूँ, है ना? Yes, sir. ये इक्वेशन रखेंगे. Writing these m equations from equation 2 onwards in matrix form, we have what? Alpha 1 We have x1 transpose x1, okay? Yes, sir. x1 transpose x2 X1 plus so on, and so on. Yes, sir. x1 transpose xm minus 1, so yeah. Yes, sir. Then x2 transpose x1, x2 transpose x2, so on, x2 transpose x of यहाँ पे x1 transpose xm भी है ना? Yes, sir. xm minus 1 और x2 transpose xm. इसी तरीके से आगे है ना? लास्ट वाला क्या होगा? xm transpose x1, xm transpose x2, xm transpose x of m minus 1 और xm transpose xm. सही है? Yes, sir. Multiplied by alpha 1, alpha 2, so on up to alpha m Yes, is equal to 0 है ना सभी में? जी सर. Isn't it? Yes, sir. Is equal to 0. A big 0. Yes, sir. Isn't it? Yes. सही है ये? जी सर. Okay.
Do you know what is this? Sorry, this will become I. x1 ट्रांसपोज नहीं, इसको क्या कहते हैं? अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जी सर और आप परफॉर्म कर रहे हो ये वाला ऑपरेशन x1 ट्रांसपोज इनटू x2. If you have two vectors and you are performing this operation on two vectors, what is this known as? This is known as scalar product or dot product of two vectors. Dot product यही होता है ना? अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, जी सर, it's done like this, x1 transpose x. in matrix form, yes. हाँ, This is true. इसमें ये स्केलर एक्चुअली आता है. जी सर. x1 का साइज एक्चुअली n क्रॉस 1 है. x1 ट्रांसपोज का 1 क्रॉस n है. Yes sir. So this is 1 cross n and this is n cross 1. तो इसका प्रोडक्ट जो होगा that will be 1 cross 1. Yes sir. तो ये हर एक की स्केलर होगा. Although x1 और x2 जो है ना ये वेक्टर्स हैं. जी सर. लेकिन जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन पे वो स्केलर आ जाता है. दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. जी सर. आर यू गेटिंग मी? Yes sir. अच्छा. सो नाउ ये जो मैट्रिक्स बना है यहाँ पे ये वाला, I call this matrix as G. Yes sir. And this vector of alphas, I call it big alpha. Yes sir. Okay? जी sir. So I can write this expression as G alpha equal to 0. है ना? Yes sir. Matrix G जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना अब. जी sir. This is square matrix. Yes sir. Isn't it? Yes sir. And cos. So if this तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है फॉर अल्फा, this is an equation of this type, ax equal to 0. Yes sir. है ना? Yes sir. The solution of this equation is unique if and only if this G is an invertible matrix. Yes sir. Or G is a full rank matrix. जी sir. If G is rank deficient, this equation will have infinite solutions. Yes sir. Are you getting me? Yes sir. So in case, let's assume that G is a full rank matrix. In that case, this equation will have a unique solution which is alpha equal to 0. Yes sir. Which is alpha equal to 0. You remember the assumption we had taken was that the given set of vectors is linearly dependent. Yes sir. And in case of linearly dependent set of vectors, there exists alpha 1, alpha 2 up to alpha m, Yes sir. at least one of them being non-zero, such that that particular equation is satisfied. जी sir. Now, what we are saying here is that this equation will have a unique solution if and only if G will be an invertible matrix. Yes sir. If G is an invertible matrix, you can express this as alpha is equal to G inverse into 0, that will be 0. Yes sir. So in that case, alpha will be 0, which will contradict our assumption that alpha, at least one alpha is non-zero. जी sir. Are you getting me? So that gives me the condition for testing the linearly dependent or linearly independent set of vectors. जी sir. If I have to check whether a given set of vectors is linearly dependent or independent, I have to create this matrix G. जी. And I have to check the rank of this matrix G. जी sir. In case G is a full rank matrix, then the given set of vectors is linearly independent. And in case G is a rank deficient matrix, then the given set of vectors is linearly dependent. Yes sir. That is. Are you getting me? Yes sir. A unique solution alpha equal to 0 exists for this equation. For this equation, if G is a full rank matrix. If G is a full rank matrix. Assuming that G is in fact a or G is a full rank matrix, assuming that G is a full rank matrix, this set of equations will have a unique solution alpha equal to 0, which contradicts the assumption
non-zero, Yes, sir. which contradicts the assumption of Non-zero. non-zero alpha. This gives us the condition for testing the linear dependence oblique independence of vectors. Independence of vector. इसका मतलब ये हुआ कि a given set of vectors is linearly independent if and only if this matrix G is a full rank matrix. Yes. Or in other words, if the determinant exists for this matrix G. That's another way of checking whether the matrix G is linear is full rank or not. Yes, sir. मतलब आपको ये मैट्रिक्स G बनाना है पहले जी सर. इस लॉजिक से, और बाद में आपको देखना है कि ये मैट्रिक्स G जो बना इसकी रैंक फुल है कि नहीं. अगर रैंक फुल है तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर ये रैंक डेफिशिएंट है तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट. जी सर. Are you getting me? So this gives us the condition for checking the linear dependence or independence of vectors, which can be stated as a given set of vectors is linearly independent if the matrix G is a full rank matrix. Yes. Full rank, or in other words, if determinant of G is non-zero. Determinant of G is non-zero. And if this G is a rank deficient matrix, or if determinant, or in other words, if determinant of G is zero, then the given set of vectors is linearly independent. Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. We'll state that also. A given set of vectors is linearly dependent if G is a rank deficient matrix. A rank deficient matrix. Or in other words, if determinant of G is equal to 0. समझ आया? Yes, sir. तो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करने का ये इजी तरीका है. इसी मैट्रिक्स G को ग्रामियन मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स G is known as Gramian matrix. Okay? Yes, sir. Matrix G is known as a Gramian matrix. So if somebody asks you, you are given a set of vectors. Yes, sir. आपको बता रहे कि इसका ग्रामियन बताओ क्या होगा. जी सर. तो आपको ये मैट्रिक्स बनाना है. जी सर. मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं. एक तरफ 1 2 3, दूसरा है 2 1 4, तीसरा है 3 1 3 5 6. ये 3 वेक्टर्स हैं आपके पास. Yes, sir. हर एक के 3 कंपोनेंट्स ही हैं यहाँ पे. Yes, sir. आपको बताया जा रहा है कि इनका ग्रामियन इवैल्यूएट करो. बताओ इसमें इन 3 ये जो वेक्टर्स हैं, Yes, sir. इसका ग्रामियन इवैल्यूएट करो. We will call this matrix, this vector is x1, this one is x2, this one is x3. Yes, sir. Then we'll generate this matrix. Yes, sir. x1 transpose into x1. Yes, sir. x1 transpose क्या होगा? 1 2 3 2 1 into x1. That's 1 2 3. है ना? Yes, sir. That's how much? That's 1 plus 4 plus 9. That is 14. Yes, sir. तो यहाँ पे इस एंट्री पे 14 आएगा. Yes, sir. Then x1 transpose into x2. So x1 transpose into this. Yes, sir. That will come here. Yes, sir.
then x1 transpose into x3 that will come here. जी सर. इसी तरीके से ये पूरा मैट्रिक्स बनेगा. Yes sir. तो फिर वही मैट्रिक्स आपको देखना है कि इसकी रैंक क्या है इसमें, अगर ये या उसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है. अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो ये गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. जी सर. और अगर जीरो आया तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट. समझ आया? जी सर. तो इस मैट्रिक्स को ग्रामियन मैट्रिक्स कहते हैं. यस सर. ओके. So keep it at the back of the mind that we are actually preparing ourselves for understanding that theorem related to controllability. Yes sir. है ना? जी सर. तो हम वही चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं. Now we will take our discussion a bit further. Condition for linear dependence of the independence of vector functions. Vector functions of वेक्टर फंक्शन. अभी तक हम देख रहे थे वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स में वी आर most of the time, then in particularly in case of checking the controllability, we are interested in checking the dependence independence of vector functions. Vector function क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी कंपोनेंट्स कांस्टेंट्स नहीं हो. They are functions of time. जी सर. Are you getting me? Yes sir. So you have a vector whose components are not constants. Just like this. It's not like this. 1, 2, 3. Yes sir. They are actually functions of time. You may have something like this: sine of t, e to the power minus t, cos of t. Yes sir. So your components of vectors are not constants. They are actually functions of time. Those functions are known as vector functions. जी. What do we call them? Vector function. Vector functions. So we basically have to state the condition for linear dependence independence of vector functions. Okay? Yes sir. Consider a set of m vector functions we call them fi. Okay? Yes sir. जैसे हमने उसमें xi लिया, I running from 1 to m. Okay? Yes sir. Each having n components. Each having n components. Okay? Yes sir. We have to state the condition for linear dependence independence of these vector functions. Yes sir. Then as per the definition of linearly independent linearly dependent set of vectors, there exist scalars alpha I, है ना? I running from 1 to m, such that each at least one of them being non-zero, at least one of them being non-zero, such that alpha 1 f1, mind it, f here is a function, Yes sir. plus alpha 2 f2 plus so on, alpha m minus 1 fm minus 1 plus alpha m fm equal to this. Isn't it? Yes sir. Okay? Yes sir. This is the definition for a linearly dependent set of vector functions. Yes sir. Exactly same as in the previous case. जी.
In case the above equation implies alpha equal to 0, vector alpha equal to 0. That means when alpha equal to 0, then the given set of vector functions is linearly independent. Okay? ठीक है ना? Now, in order to test the condition for dependence independence, what I do is ये जो फंक्शन है ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना? f आपका जो है ये वेक्टर फंक्शन है। आपके पास ऐसे m वेक्टर्स हैं जिनके के हर एक वेक्टर के n कंपोनेंट्स, वही बोला है ना हमने? दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है, जैसे पहला वाला फंक्शन जो है, मान लो पहला वाला फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, f11 f12 so on up to f1n है ना? इसी तरीके से, और हर एक फंक्शन जो इसमें वो फंक्शन ऑफ टाइम है। हर एक टर्म जो इसमें दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली यू हैव अनदर फंक्शन f21 f22 up to so on up to f2n। ऐसे ही आपके पास m वेक्टर्स हैं, है ना? ऐसे ही आपके पास m वेक्टर्स हैं, जैसे ऐसे fm1 fm2 fmn n कंपोनेंट्स है ना? ये जो आपकी ये हमने इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे। So it becomes a matrix actually like this, F matrix. है ना? जिसमें हमने इंडिविजुअल वेक्टर फंक्शंस के कंपोनेंट्स लिखे। और हम कह रहे हैं when I am writing this equation, I am actually what I am doing, I am multiplying this particular vector by alpha 1, this by alpha 2, this one by alpha m, adding them up and putting it equal to 0. वही कर रहा हूँ ना मैं? मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली ऐसी इक्वेशन है ना, दिस इज अल्फा 1 f11 f12 so on f1n है ना, प्लस अल्फा 2 f21 f22 so on up to f2n है ना, प्लस so on अल्फा m fm1 fm2 so on up to fmn equal to 0। सही है ना? ये इसी को दूसरे तरह, this is another way of writing the same thing, isn't it? So this is basically f1 है ना? This is f2, this is fn, नहीं fm। ये मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा खोल के लिखा, just to make you understand what actually the equation looks like, isn't it? Okay, so if you have equation like this, alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 and so on, alpha m minus 1 fm minus 1 plus alpha m fm। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा, दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, या जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वो हम ऐसे लिखते हैं x1 x2, that is actually called x1 transpose x2। This is known as scalar product of two vectors।
scalar product of two vectors. Yes, sir. Similarly, the scalar product of two vector functions अगर हो, वो कैसे डिफाइन करते हैं? Scalar product of two vector functions fi comma fj. They are both functions of time. Yes, sir. The scalar product of two vector functions fi and fj, that's defined as like this. fi fj इनका scalar product. Yes, sir. That is equal to integral of t naught to t1. Okay. Yes, sir. Integral of t naught to t1 fi transpose Yes, sir. fi, which is a function of time. They are both functions of time, na? Yes, sir. This is fi ft. Yes, sir. हमारी जो ये फंक्शन f1 है, मान लो इसका साइज क्या है? 1 cross n. नहीं, 1 cross n नहीं, it's n cross 1. N cross 1, sorry, sir. Yes, sir. और इसका साइज, इसके ट्रांसपोज का साइज होगा 1 cross n. इसका साइज n cross 1 है ना? Yes, sir. इसके ट्रांसपोज का साइज क्या होगा? 1 cross 1 n cross n. होगा ना? Yes, sir. So fi transpose into fj transpose dt. Yes, sir. In case हमने ये जो फंक्शन ली, ये हमारी कॉलम इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स. Yes, sir. अगर ये रो फंक्शन, रो मैट्रिक्स, रो फॉर्म में होती, जी सर, तो उस केस में ये ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा. यस सर. क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये बनना चाहिए स्केलर. स्केलर, जी सर. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आपकी जो फंक्शन है वो रो फॉर्म में लिखी हुई है, मींस अगर उसका साइज 1 क्रॉस n है, यस सर, तो उसको मल्टीप्लाई करना है फिर n क्रॉस 1 से ताकि ये स्केलर बने. जी सर. लेकिन इस केस में हम ये ले रहे हैं एज ए कॉलम, इन कॉलम फॉर्मेट. यस सर. So I will have the scalar product defined like this. जी सर. Are you getting me? यस सर. So what I do is, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, I'll pre-multiply it on both sides by f1 transpose, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया. यस सर. And I'll go on dividing it, फिर दूसरी बार f2 transpose से, तीसरी बार f3 transpose से, and I'll go on dividing it up to fm transpose. यस सर. पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा on both sides by pre-multiply it on both sides by f1 transpose. Then I will integrate it from t0 to t1. यस सर. So what I will do is, this is clear now? यस सर. What I will do is, I will pre-multiply this equation on both sides. Pre-multiply on both sides by f1 transpose, f2 transpose, so on, up to fm transpose to get m equations. है ना? यस सर. क्या इक्वेशन मिलेंगी वो मुझे? पहले मिलेगी अल्फा 1 f1 ट्रांसपोज, और साथ में मुझे इंटीग्रेट भी करना है. जी सर. एंड ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t0 to t1. यस सर. t0 to, it's like this, alpha 1 f1 transpose f1 f1 integral t0 to t1 or dt dt. यस सर. plus alpha 2 integral of t0 to t1 plus नहीं, हाँ, plus alpha 2 t0 to t1 f1 transpose f2 dt यस सर. plus so on alpha m integral of t0 to t1. सही है? यस सर. f1 transpose fm dt equal to 0. यस सर. है ना? जी सर. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अल्फा 1 इंटीग्रल ऑफ t0 to t1 f2 transpose f1 dt. यस सर. प्लस अल्फा 2 इंटीग्रल ऑफ t0 to t1 f2 transpose f2 dt. सही है ना? यस सर. प्लस so on अल्फा m इंटीग्रल ऑफ t0 to t1 fm नहीं f2 transpose fm dt equal to 0. यस सर. ये बनी दूसरी इक्वेशन. इसी तरीके की m इक्वेशन मेरी बनेंगी.
Yes, sir. लास्ट वाली इक्वेशन में ये इसकी जगह आएगा fm. It will be like this. Alpha 1 integral of t naught to t1 fm transpose f1 dt. सही है? Yes, sir. Alpha 2 integral of t naught to t1 fm transpose f2 dt plus so on. Alpha m integral of t naught to t1 fm transpose fm dt equal to 0. Yes, sir. So if I write these m equations in matrix form as I did in the previous case, Yes, sir. writing these m equations in matrix form, okay? Yes, sir. We have what? We have like this. Integral of t naught to t1 f1 transpose f1 dt, है ना? Integral of t naught to t1 f1 transpose f2 dt, so on. Integral of t naught to t1 fm transpose नहीं fm नहीं f1 transpose fm dt, Yes, sir. है ना? जी. दूसरी इक्वेशन दूसरी क्या आएगी? इंटीग्रल ऑफ t naught to t1 f2 transpose f1 dt, सही है? Yes, sir. इंटीग्रल ऑफ t naught to t1 f2 transpose f2 dt, so on. इंटीग्रल ऑफ t naught to t1 f2 transpose fm dt, है ना? so on. इसी तरह की m इक्वेशंस होंगी ना? Yes, sir. और उसके साथ में अल्फाज अब जी. यहाँ से alpha 1, alpha 2, so on up to alpha m equal to 0. सही है? Exactly उसी एनालॉजी पे जिसमें हमने वेक्टर्स की केस में देखा था, उसी एनालॉजी पे यहाँ पर देखा. This matrix G, this matrix is G, again this matrix is alpha. So I again get the same equation. G alpha is equal to 0. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. I get the equation G alpha is equal to 0. और G के बदले I write it as, I represent it like this. W defined from T naught to T1. क्योंकि इसकी जो terms है, Yes, sir. उसकी evaluation dependent है इस limit पे. जी, sir. So W T naught to T1 into alpha is equal to 0. Yes, sir. W T naught to T1 into alpha is equal to, where W T naught to T1 is known as the Gramian function, because it becomes here. And it's defined like this. Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. It's defined as T naught to T1 is actually integral of T naught to T1, isn't it? Yes, sir. T naught to T1 F transpose T Ft dt. F is that matrix that I had defined, Yes, sir. है ना? Yes, sir. This. लेकिन मैंने इसकी जो फंक्शन F की जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो मैंने कंसीडर किए हैं कॉलम्स. Yes. In case they are I have considered them as, in case they are rows, this transpose will change. It will Yes, become Ft into F F transpose. transpose. जी, sir. That you have to remember. Yes, sir. Are you getting me? So this is known as the Gramian function. जी, sir. अच्छा, अब देखो ये वाली आप इक्वेशन, ये वाली, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स. जी, सर. जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था कि इस इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि ये जो मैट्रिक्स है ये फुल रैंक मैट्रिक्स होगा. आर यू गेटिंग मी? सो if a unique solution
exists for every equation, या इसको नाम रखेंगे कुछ 2, हाँ, for equation 2, okay? Yes, sir. If W T naught P1 is a full rank matrix, and that unique solution will be alpha equal to 0. Alpha equal to 0, which gives the condition for linear independence of vector functions of yes, sir. वेक्टर फंक्शन। तो अगर आपको वेक्टर फंक्शंस दी हुई हैं और आपको कहा जा रहा है कि बताओ ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो आपको ये ग्रेमियन फंक्शन जो ग्रेमियन ये है, ये आपको जनरेट करना है वाला मैट्रिक्स। और इसको कैसे जनरेट करना है? इस तरीके से। तो जब आप इसको जनरेट करोगे तो फिर इस मैट्रिक्स की रैंक देखो। अगर ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, या अगर इसका दूसरे लफ्जों में अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उस केस में आपकी गिवन सेट ऑफ वेक्टर फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जी सर। और अगर आपका ग्रामियन वाला फंक्शन जो है वो जीरो निकला, तो आपका गिवन सेट ऑफ वेक्टर फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट। जी सर। आर यू गेटिंग? यस सर। सो विद दिस बैकग्राउंड we can now proceed to prove that theorem that we had stated last time. Yes sir. We had said that we were basically trying to prove the controllability, trying to state the controllability tests. Yes sir. और उसमें हमने देखा कि अगर किसी भी सिस्टम के लिए कंट्रोलेबिलिटी के लिए एक कंडीशन है कि उसका जो कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन है, yes sir, कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन उसका फुल रैंक मैट्रिक्स होना चाहिए। yes sir. तो अब इसी बैकग्राउंड को लेके बताएंगे कि कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन क्या होता है। yes sir. वो डिपेंड करेगा इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये डिफाइन करेगी कि ग्रामियन कौन सा है, yes sir. whether it is a controllability ग्रामियन और an observability ग्रामियन, वो देखेंगे बाद में। कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन के लिए ये f का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, तो हम देखेंगे कि वो फॉर्मेट बना के हम देखेंगे कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन को पहले डिफाइन करेंगे और बाद में देखेंगे कि कंट्रोलेबिलिटी ग्रामियन अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर हुआ तब आपका सिस्टम कंट्रोलेबल होता है, वो प्रूव करेंगे वो थ्योरम, और कॉरस्पॉन्डिंगली फिर उसका दूसरा टेस्ट भी प्रूव करेंगे। Yes sir. Are you getting it? Yes. Is it clear? Yes. So you'll have to revise it properly. You'll have to just assimilate it properly in order that we actually are ready to prove the test for control. Yes sir. Are you getting it? Yes sir. So we'll stop here.